आज के वीडियो में लेट्स डू अनदर सॉल्व अ केस स्टडी विथ मी। Hi everyone, welcome to Insider Gyaan. मेरा नाम सौमी है. I am an IIT Delhi and ISB Hyderabad grad, and on this channel I share a lot about my last 10 years of corporate experience. I share a lot of content on case studies, MBA related things, educational videos on Excel, etc. So if any of those things interest you, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मैंने 8 साल तक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फील्ड में काम किया है एंड जस्ट बेस्ड ऑन दैट आई डू अ लॉट ऑफ सॉल्व विथ मी केसेस ऑन दिस चैनल। लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ये था कि आई शुड डू मोर बिकॉज आप लोगों के पास शायद केस स्टडी की इतनी रिपोजिटरी नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे अगेन। I have my notes and a case problem with me. What I want you guys to do is take down the problem statement when I'm stating it down. थोड़ा सा pause लो and before I share what the solution is going to be, try to solve bits and pieces yourself and then see if you align with what I have to say. If you don't align, that's okay as well, क्योंकि हर केस को सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होता है. If you think you have a better way of solving, then of course leave them in the comments so that I can know about it, others can know about it as well. So शुरू करते हैं. The problem statement of today's case is our client is a chemical manufacturing and selling company. Recently sales have dropped massively because of new waste disposal regulations. Also, market research has found that the industry will only grow at 3% in the next 10 years. So our client basically wants to diversify while keeping its current business intact because they want to grow at a faster rate. So what is the advice that you will give to him? जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुन के आपको लगा होगा बहुत ही ओपन एंडेड सा केस है. आपका जो क्लाइंट है उसके लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन कंपनीज ढूंढनी है. You have to literally boil the ocean to come up with a list of companies. So I think one thing that you need to realize here is जो exact कंपनी एग्जैक्ट इंडस्ट्रीज है वो आपको एज रिकमेंडेशन नहीं बताने हैं केस रिक्रूटर को. ऑन द कॉन्ट्ररी यू नीड टू वॉक हिम और हर थ्रू योर अप्रोच सो दैट यू कैन जीरो डाउन ऑन द फाइनल लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज दैट योर क्लाइंट शुड गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन. इस केस में आपको ये भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है दैट इट इज़ अ मार्केट एंट्री केस. आपका जो क्लाइंट है वो एक नए इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं. सो मार्केट एंट्री फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हो विच आई हैव शेयर्ड अर्लियर इन वन ऑफ माई वीडियोज. आई एम गोइंग टू लिंक इट अप हियर. थर्ड थिंग टू नोट इज इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है डबल चेक करना, वैलिडेट करना कि क्लाइंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है. सो इस केस में मोस्टली आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए आफ्टर यू हैव समराइज द केस to the recruiter is what all are the objectives of the client. Is it just to grow at a faster rate than 3%, or if there are other considerations like profitability or breaking out into new customer segments, etc. In this case, when you ask the question, the recruiter says that the final objective is to just diversify for growth, and जो growth rate expect कर रही है कंपनी वो है 10% annual. And because क्लाइंट की करंट इंडस्ट्री सिर्फ 3% से ग्रो करेगी, आपको ऐसे कुछ हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज क्लाइंट के लिए आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है जिससे वो ओवरऑल एज अ कंपनी 10% पे ग्रो कर पाए. सो नाउ मूविंग टू द फ्रेमवर्क और हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर इट. मेरे हिसाब से इस केस को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं. Number 1 is identifying the list of industries that you will recommend the client can potentially consider entering into for diversification. Number 2 is उस लिस्ट में से आप जीरो डाउन कैसे करोगे to 1 or 2 industries which you are actually going to recommend to the client. And number 3 is you are going to recommend how to enter those 1 or 2 industries. What are the different ways that the client can enter into those new industries? Step number 1 is to find a list of the industries, and इसके कई तरीके हो सकते हैं. जो 3 चीज़ें मुझे समझ आए वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है. Number 1 is
understand the products of your company that it has currently. Cleaning chemicals तो produce करती है, but cleaning chemicals for what? Is it for kitchen? Is it for bathroom? Is it for glass? Is it for everything in general? Is it for your clothes, for your utensils? So once you get to know कि आज कौन से product lines exist करते हैं company में, you can try to find a few other industries जहाँ पे थोड़ी सी आपको product line को diversify करना पड़ेगा, but still it's going to be within the same cleaning family. So that is one way you can do it, by looking at the products. Number two is also you can try and first understand the customer segments that you have for the company. आज के customer segments क्या है, उसके बाद you want to see what are the other synergy वाले needs for your same customer segment, and then try to zero down the industries based on आपके current customer के needs. Because जो current customers है वो already आपके customers है, वो आपके brand के बारे में जानते हैं, वो आपके brand use करते हैं बहुत effectively, बहुत सारे लोग होंगे जो शायद loyal भी है आपके brand में. So why not use the same customer base to meet some of their additional cleaning requirements or non-cleaning synergistic requirements as well. Example अगर दे तो जैसे कि अगर आपके कस्टमर्स लाइक डायरेक्ट टू कस्टमर कंपनी है, कंपनी डायरेक्टली मेरे को सेल कर रही है या आपको सेल कर रही है, जो भी इंसान क्लीनिंग सप्लाईज खरीदेगा उसकी वन ऑफ द नेचुरल नीड्स होंगी मे बी क्लीनिंग इक्विपमेंट, राइट? और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि अगर आप एंटीसेप्टिक किचन क्लीनिंग टाइप की चीज़ें बना रहे हैं तो क्या आप डिश वॉशिंग लिक्विड्स भी बना सकते हैं, क्या आप लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स बना सकते हैं, अगर आप लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स ऑलरेडी बनाते हैं तो क्या आप लॉन्ड्री फ्रेग्रेंस काइंड ऑफ चीज़ें बना सकते हैं, क्या आप उस इंडस्ट्री में जा सकते हैं. दैट इज़ हाउ यू शुड थिंक अबाउट इट. सेकेंडली ये भी पॉसिबल है कि आपके जो कस्टमर्स है थोड़े तो डायरेक्ट टू D2C कस्टमर्स है, बट देर आर सम हु आर ऑल्सो से बिजनेसेस, आपके B2B में भी कुछ कस्टमर्स है. तो उस केस में आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हो कि बड़े क्लाइंट्स कौन हैं, आपके बड़े बिजनेसेस क्लाइंट्स कौन हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ह्यूज चंक ऑफ योर रेवेन्यू, एंड डू यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर एडिशनल नीड्स आर एंड देन ट्राई टू केटर टू सम ऑफ दोज नीड्स. जैसे कि क्लीनिंग एजेंट्स कौन खरीद सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खरीदते होंगे, मे बी कोई F&B फूड एंड बेवरेज कंपनी, बड़ी सी फूड एंड बेवरेज कंपनी आपकी क्लाइंट है. तो इस केस में क्लीनिंग एजेंट के साथ क्या किसी तरह का फूड जो ये कंपनी बनाती है उसके रॉ मटेरियल्स उसको सप्लाई कर सकते हो, so that you can enter a new industry and you can use your current customer base to sell. जो थर्ड तरीका है मेरे हिसाब से to find out more industries is looking at your competitors. So who are the other competitors who are producing cleaning agents and potentially ones who are bigger conglomerates, because bigger conglomerates don't just have one product line but they have multiple product lines. तो आप उन कंपनीज अपने competitors के product lines को देखो and accordingly you can identify, you can get a few ideas where your competitors are getting into, and obviously if your competitors are getting into some of those fields, it naturally means that there could be some synergies in those fields and that is why they're entering there. So those are also potentially some of the industries that you can consider, and maybe after step 1 you come up with a list of 10 industries. Now step 2 is for you to zero down from the 10 industries to 1 or 2 industries which you can actually recommend टू द क्लाइंट. उसके लिए सबसे पहले तो आपको ग्रोथ रेट देखने की ज़रूरत है हर इंडस्ट्री का, वो मार्केट कैसे एक्सपैंड कर रहा है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में, मार्केट की ग्रोथ रेट क्या है, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट क्या है, क्या कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी या वही रहेगी या घटेगी. And this is important for you to know because if you remember, the major objective is for your client to grow at a much faster growth rate. So any company with above 10% growth rate are the ones you are going to include. Firstly तो वही filter लग जाएगा आपका 10 industries में से maybe you will zero down 5 just by using that filter. Next you are going to use the typical market entry framework to identify the attractiveness of each of those industries for your client. And इसमें क्या क्या factors आते हैं. एंट्री बैरियर का फैक्टर आएगा कि एंट्री बैरियर कितनी बड़ी है उस इंडस्ट्री में. एंट्री बैरियर कैन बी रेगुलेशंस और इट कैन बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत सारा कॉस्ट अगर उस इंडस्ट्री में घुसने के लिए आपको चाहिए तो दैट कैन ऑल्सो बी एन एंट्री बैरियर फॉर यू.
Secondly, you also want to look at how competitive the industry is right now. If it is already very competitive, then your margins will be much lower. So do you really want to get into a very competitive market? Other things are, is there a threat for any substitute products in that market? How are the suppliers? Do the suppliers hold a lot of bargaining power, or are they okay? So those are the things which make up the market entry framework. And market entry framework use करके आप mainly अपने फाइनल रिकमेंडेशन में आओगे टू द 2 or 3 इंडस्ट्रीज which you will recommend the client to enter into. Now, the last thing that you want to identify, analyze is how do you enter any of those industries. अब किसी भी नए इंडस्ट्री में घुसने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. Number 1 is an M&A, mergers and acquisition. You can go, and if you have enough cash on your balance sheet, then you can just acquire a company who is doing the same things that you want to enter into. Or you can enter into a partnership with a company जिसके साथ आपके थोड़ी बहुत synergies है. जैसे कि मान लीजिए आपके कंपनी के पास अगर कस्टमर बेस है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, then you will likely look for a partner who can help you manufacture the core product of the industry you want to get in. And lastly, of course, you can do everything on your own. And when you try to do everything on your own, it is important to analyze whether you have the capabilities or not. Capabilities, if you want to do everything on your own, then ये देखना ज़रूरी है कि synergies जो है आपके नए इंडस्ट्री और करंट इंडस्ट्री में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो. जैसे मान लीजिए आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो क्लीनिंग एजेंट, उसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अब जो नया इंडस्ट्री है उसकी चीज़ें भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो. दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिनर्जी, बिकॉज आपको एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाने की ज़रूरत ही नहीं है. सो ये सारी चीज़ें और ये जो थॉट प्रोसेस है, इस केस में आपको ये समझाना ज़रूरी है रिक्रूटर को. And I think, again, I want to emphasize that the main motive of this case is not for you to come up with exact recommendations of industries, but to come up with a very, very detailed framework, and you walk the interviewer through it, through all the thinking process that you have, so that he or she can get a glimpse into your process, and finally you can come up with a recommendation. As you also saw that this case was very, very qualitative. So ऐसे कई सारे cases होंगे. जो मैंने पिछला वाला case किया था, which was on Harley Davidson, that was a bit of quantitative case, and this one is fully qualitative. Cases किसी भी तरह के हो सकते हैं. So that's about it. Hope you found this helpful. अगर और भी केस स्टडीज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स पे बताओ how I can help you more in this regard, because a lot of you don't have a repository of cases. And if you like this video, please hit the like button and subscribe to the channel. I am trying to see the response of these case study videos, so just based on that I'll continue or discontinue making more of these videos. So please comment पे बताओ या मुझे like करके indicate करो that these videos are helpful. And that's about it. I'm going to see you in the next one. Till then, bye.